Yeah, so we are live on Facebook. So a warm welcome. So warm welcome to each one of you present today in this meeting. Today we are celebrating World Nature Conservation Day. As such, we are celebrating Plastic Free July along with it. And the theme for the Nature Conservation Day is this 2021 is Forest and Livelihoods and Sustaining People and Planet. So this is the theme that is designed and designated by UN for the Nature Conservation Day. तो आज का ये टॉपिक हम थोड़ा हिंदी में भी लेना चाहेंगे क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और कई लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमें भी प्रयोग करना चाहिए ताकि सब लोग बहुत आराम से और निसंकोच इसके साथ जुड़ सके। सो आज का जो टॉपिक है नेचर कंजर्वेशन डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हमारे विक्की वेस्ट बंगाल ऑर्गेनिक फार्मिंग काउंसिल के प्लेटफॉर्म से, तो ये टॉपिक हमको फिर से एक बार उस चीज की याद दिला देता है कि इस प्लेनेट पे रहने वाले लोग और हमारे जो हमको जो रिसोर्सेज मिले हैं, जो उपलब्ध संसाधन है, वो दोनों के अस्तित्व का महत्व कितना जरूरी है एक दूसरे के लिए, ये जानने के लिए और ये समझने के लिए वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे का आयोजन एवरी ईयर हर साल 28 जुलाई को यूएन द्वारा किया जाता है। तो हमने जब सोचा कि इको ब्रिक्स के बारे में हम एक वर्कशॉप लेने जा रहे हैं, तो सोचा कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के अलावा कोई दूसरा डे नहीं हो सकता इससे अच्छा। सो वी हैव डिसाइडेड टू टेक दिस सेशन ऑन दिस स्पेशल डे। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आज आप अपने आसपास के वातावरण में के साथ में अपने ही घर से शुरू करके आप अपने पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाने में योगदान दे सकते हैं। तो जैसे कि हम बहुत प्लास्टिक फ्री जुलाई में सब लोगों को बहुत ज्ञान मिला है, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हमको नहीं यूज करना है, कंपोस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, आप सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं, वेस्ट को मैनेज करना सीख सकते हैं, अपने आसपास पेड़ लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको लेकर हम अपने पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। तो आज हमने एक सेशन ऑलरेडी प्लास्टिक फ्री जुलाई के ऊपर कर लिया है कि जिसमें हमने वेस्ट को मैनेज कैसे करना है, उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कैसी काम करती है, उसके लिए हमने बात की थी। आज का हमारा ये सेशन उसी के कंटिन्यूएशन में है कि जब जो प्लास्टिक आप रिसाइकल में नहीं दे सकते हैं तो उस प्लास्टिक को फिर आगे क्या किया जाए। तो उसके लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हमारे सेशन में आज मौजूद है। रोशनी राय, उनका इंट्रोडक्शन हम डिटेल में बाद में जब उनका सेशन स्टार्ट होगा तब लेंगे। एंड योगिनी बापट, Yogini Bapat is secretary of Vicky West Bengal Organic Farming Council. So she is a moderator of the show today and she's one of the speaker. And it is our privilege to have Manjula ji and Indu ji both on the show today. So it's my request Manjula ji कि आप इसके लिए दो शब्द कहें। You are on mute Manjula ji, please unmute yourself first. Yeah, very warm welcome and a very good afternoon and namaste to everybody. It is so delighted that we can see so many people from outside of Kolkata. Of course, we have our speaker over here also who is going to talk about conservation and all. And Yogini is going to talk about, yes, eco bricks, and I'd heard her session earlier. So I thought it would be a good idea to spread the awareness of how to conserve your plastics, the waste plastics, which we are using every day as wrappers and like snacks items and everything in which we get those plastics. So I think Sheetal has spoken enough about it. So we can just move on with the session. Thank you so much, Sheetal, for inviting me to talk. It's our pleasure to have you on the show, Manjula ji, and your constant love and support and guidance actually matters a lot for us. Yeah, and I request Indu ji, please say a few words about the session today. Yeah. Well, thank you so much, Sheetal.
And it's really going to be a lovely session, I'm sure, because I'm looking forward to this workshop. I'm not very well versed in this line, but I've heard so much about it, and I would really like to learn from all of you. In fact, the organic farming team is really bringing across so many things to us, which is a great learning. Thank you, Sheetal and team, for this. And all the best to all of you for your future ventures too. Looking forward to hearing from Yogini and Roshni. So it's going to be a great learning for me personally also. Thank you so much. Thank you so much, Induji, for your kind words. And always you give motivation to us to do new and the dynamic things in our council. So let us move ahead with the session by welcoming our first guest. And she's also, she's not guest actually to us. She is a member of WICCI West Bengal Organic Farming Council. She's holding the position of secretary to the council. And I know her very well. She's a very good friend of mine. So it is my pleasure to introduce Yogini Bapat to each one of you. So let me share something about Yogini today. हम योगिनी का थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं. So she is actually by education she is BE in civil engineering, and after that she has done her masters in environmental engineering, and she has worked in Thamex Limited Pune. उन्होंने वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन में ट्रेनिंग के हिसाब से काम किया था, और बायोमेडिकल वेस्ट के लिए बहुत सारा काम उन्होंने किया है. एंड शी इज ऑल्सो एक्टिव मेंबर ऑफ पर्यावरण संरक्षण समिति की जो सेंट्रल टीम है, उनका भी उनके भी वो बहुत एक्टिव मेंबर है, और वो नारी शक्ति टीम की भी सदस्य है, और सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी कोर कमेटी की मेंबर है. एंड शी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी विवेकानंद विद्या विहार परिषद और गौ सेवा परिषद पश्चिम बंगाल की भी वर्किंग कमेटी की मेंबर है. So list is actually endless for Yogini because she is very talented and versatile personality. एक बहुत ही अलग बात है उसके लिए कि वो शी इज अ एक्सीलेंट बेकर, कि वो अपनी योगिनीज लिटिल किचन के नाम से अपने बेकिंग का भी छोटा सा पैशन है, एक्चुअली बिजनेस नहीं है उसका, तो उसमें भी वो करती रहती है. तो योगिनी, इट्स आवर प्लेजर टू हैव इन आवर काउंसिल in WICCI. So now let's move ahead and let's come forward and just show the way how we can use the single-use plastic by making eco-पर्यावरण को और साफ सुथरा और सेहतमंद बना सकते हैं. कि जो प्लास्टिक, जो छोटे छोटे प्लास्टिक हम लोग इसमें यूज नहीं करते हैं, रिसाइकलिंग में भी जो नहीं जाते हैं, उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं. जस्ट अ मोमेंट. या सो एक्चुअली माय स्पॉटलाइट वाज नॉट वर्किंग. राइट नाउ इट हैज स्टार्टेड वर्किंग. सो लेट मी इनवाइट योगिनी वंस. या, थैंक यू सो मच. सो वेलकम योगिनी टू द शो. एंड now it's the platform is yours. You can show the things and you can just discuss the thing. And if you have any questions during the session, just write in the chat box so that we can just convey your question to Yogini. And afterwards, after the session, like for last 10 minutes, we will keep for the open question answer session. So in between, if you have any questions, you can definitely write in the chat box. We will convey it. Yeah. So Yogini, please go ahead. Yeah, thank you so much, Sheetal ji, for this warm welcome. इतना सारा introduction, इतना छोटा सा next time, बहुत छोटा सा कीजिए just Yogini for all of you. So actually, I am here to tell you about what can we do after we refuse plastics, after we reduce using plastics, after we recycle them, after we rethink about them. What can you do? So we are left, even after following all these 4 to 5 principles, or the R's, which we say, the famous 3 R's. For some there are 4. For me, there are always 5 R's. So after the 5 R's, still we are left with all the single-use polythene bags. What do we do about it? Most of the times people say, आपको इसको फेंकना नहीं चाहिए, आपको recycling के लिए देना चाहिए.
अभी रिसाइकलर्स भी बोलते हैं इसका हम लोग क्या करें, क्योंकि वो होता है बहुत पतला सा प्लास्टिक, बहुत पतला सा पॉलिथीन होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है. दीज आर ऑल लो ग्रेड प्लास्टिक्स, लो ग्रेड पॉलिथीन जिसको बोला जाता है. एक बार ये हम लोग यूज करते हैं, उसको फेंक देते हैं और वो वही का वही सालों तक, सदियों तक पड़ा रहता है. अभी आप सोचेंगे कि आपका फर्स्ट जो टूथब्रश आपने यूज किया होगा वो अभी तक कहीं ना कहीं समुद्र में डूब के, मतलब इट मस्ट बी समवेयर लाइंग देयर डाउन इन द अंडर द सी. अभी तक होता है वो, क्योंकि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज प्लास्टिक हैज गॉट दिस प्रॉपर्टी of staying in the environment for more than 400 to 500 to 1000 years. किसी को भी पता नहीं है कि प्लास्टिक को डिग्रेड होने में कितना समय लगता है. अब हम लोग क्या कर सकते हैं? वी आर गोइंग ऑन यूजिंग इट सिंस इट इज इजीली अवेलेबल, सिंस इसकी कीमत कम होती है, सिंस इसका मेंटेनेंस कुछ नहीं होता है. पीपल गो ऑन बाइंग ऑल दीज प्लास्टिक स्टफ्स. नाउ व्हाट कैन वी डू ओवर हियर? ये जो प्लास्टिक की जो ड्यूरेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, जो इतने लंबे समय तक चलने वाली जो प्रॉपर्टी है, वो हम प्लास्टिक के अगेंस्ट ही यूज करेंगे बाय मेकिंग इको ब्रिक्स. So basically, we are going to use this durability, which is a good property of plastic, against the menace which is caused by the single-use non-recyclable polythenes. अभी आप देखोगे what is single-use recyclable polythenes. मैं एक एक प्लास्टिक आपको सबको दिखाती हूँ. सबसे पहले हम लोग रोज सुबह उठ के पहले, people do eat bread. Even now they do eat bread. So these bread का जो polythene आता है, see, this is a multi-layer polythene. इसमें aluminum foil का भी यूज किया गया है, प्लास्टिक का भी यूज किया है. So there are different layers. So what, and it is so bad. The quality देखिए कितनी आराम से फटता है. और इसको कहीं भी आप देखिए रिसाइक्लेबल कहीं नहीं लिखा हुआ होता है, खाली एक पिक्चर है यहाँ पे which shows that the person is throwing it into the dustbin. अभी ये सब, ये एक ये हो गया. I'll show you all the plastics and then I'll tell you. सबसे खराब ये जो हम लोग के सब्जी वाले जो हमें देते हैं, ये होता है. Then these come as a packaging material. वो जो तेल का कैन भी हम लोग लाते हैं तो उसके ऊपर ये पतला गंदा सा प्लास्टिक डाल के मिलता है हम लोग को. Okay, then we have these chips again, chips का पैकेट. Okay, उसके बाद आता है, इसके अंदर मैंने डाल चॉकलेट रैपर्स. लुक एट दिस रैपर. ये छोटा सा एक, ये हमारे जो छोटे छोटे टॉफीज आते हैं उनके रैपर्स है. हाउ कैन वी रिसाइकल दीज टाइनी बिट्स? ये तो रिसाइकलर तक पहुंचते पहुंचते ही जमीन में पहुंच जाएगा. ये है. देन वी लव हैविंग पिज़्ज़ास, वी लव हैविंग दीज मसालास आल्सो बिकॉज़ दीज आर द बेस्ट वंस. तो ये है. Then we buy new clothes. All new clothes come with the tag. ये दिख रहा है आपको छोटा सा टैग जो आता है, these plastic tags. These are the tags. Then आज ही मैंने एक आई ड्रॉप की शीशी खोली. आई ड्रॉप्स होते हैं, उसके बाजू में एक रिम जैसा होता है छोटा सा. ये जो हर एक कोई इसमें होता है, ये इतना छोटा सा टुकड़ा है, इसका हम क्या करेंगे? ये कोई रिसाइकलर लेगा ही नहीं आपका. So these are the things. Then of course earbuds जो होते हैं, earbuds होते हैं प्लास्टिक वाले. Do not use them. If at all use them, do not throw them into the dustbin. वो एक होता है. Then there are these cling wraps. देखिए, आप कितना भी मना करो कि मैं प्लास्टिक नहीं यूज करूंगी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो वो आपके घर में आ ही आ जाता है. ये cling wrap होता है. You call for home delivery food and all. Nowadays डबल रैप करके आता है इससे. तो ये मैं कचरे में नहीं फेंकती. ये होता है. अगरबत्ती भगवान को जलाते हो, अगरबत्ती कम्स इन दिस. ऊपर में तो कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है, अंदर में ये सब भरा हुआ होता है. देन अभी आई टेल यू, ये राखी आने वाली है. अभी विल बी मेकिंग राखीज एट होम. राखी क्यों, बच्चे भी होते घर में, क्राफ्ट करते हैं. सो दीज आर दीज टाइनी, ये आते हैं ना चुमकी जो बोलते हैं, चुमकीज, these sequins and everything. दिख रहा है? Can you see this? These are these tiny bits plastics.
So what do we do with these? We can't throw them into the dustbin. Now, why am I saying we should not be throwing it into the dustbin? ये बताती हूँ. अभी ये प्लास्टिक सबको आपको समझ में आ गए कौन से क्या खराब Yeah, प्लास्टिक and what है? about दूध की थैली? Oh yeah, the main thing. Yogini, Yes, that is yes, the yes. main रखिए most सामने. important. जी. Yes. दूध की थैली ये रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, ये रिसाइक्लेबल पैकेट है, लेकिन आप जब इसको इस तरह से कोने से काटते हो तो ये जो कोना गिर जाता है वो कभी कभी भी रिसाइकल नहीं होता. So that is the main very dangerous things are these tiny bits of plastics, you know, which we use like chocolate का छोटा wrapper हुआ, ये हुआ, और shampoo sachets हुए. Then you have those पान गुटका सब वो जो खाते हैं उसके wrappers हुए. These are all different multi-layer plastics which cannot be used by any recycler for recycling. And दूध की थैली जब भी for that matter any थैली any packet आप जब काटते हो तब you cut it like this. आप इसको कोने से कभी मत काटिएगा. कोने से जब कट जाता है तो वो जो प्लास्टिक का टुकड़ा निकल के जमीन पे चला जाएगा. It will stay there forever. It will not go anywhere for thousands of years. So you change the habit of cutting it. आप ऐसे काटिएगा, कोई भी पॉलिथीन ऐसे काटिएगा. अभी मेरे हेल्पर्स भी ऐसे ही काटने लग गए हैं. मेरा बेटा ऐसे चिप्स फाड़ के खाता है, पहले ऐसे काट के खाता था, अभी ऐसे फाड़ता है. So long as the whole packet stays intact, that is the whole idea behind it. And now all these wrappers, even for recycling, जब भी आप कोई भी प्लास्टिक देते हो, they expect it to be clean and dry. So even these plastics have to be clean and dry. You clean them properly, you dry them properly. We do not want any biodegradable substance present in it. Okay? So कोई भी खाने का पदार्थ उसमें नहीं होगा. जैसे मैंने बिस्किट्स खाया, बिस्किट के रैपर्स आए, मैगी खाई, मैगी के रैपर्स आए, तो मैगी के रैपर के अंदर भी छोटे छोटे ऐसे कण होते हैं, बिस्किट के क्रम्स होते हैं, चिप्स के क्रम्स होते हैं, कोने कोने में बैठ जाते हैं. तो आपको ये अच्छी तरह से साफ करना है, सुखाना है. बॉटल अब इको फिर नाउ विल आई वाज जस्ट गोइंग टू टेल यू कि व्हाई वी आर डूइंग दिस. तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये सॉइल में चले जाते हैं. इट पोल्यूट्स द सॉइल, पूरी जमीन खराब कर देते हैं, फर्टिलिटी खराब कर देते हैं जमीन की. फिर ये स्ट्रीम्स में चले जाते हैं, नाले में चले जाते हैं, नाले में चले जाते हैं. उसके बाद वो पानी के संग वो सब ड्रेन्स क्लॉग कर देते हैं. ड्रेन्स क्लॉग करते हैं, कोई आगे पास हो जाते हैं, आगे पास होके नदी से चले जाते हैं ओशंस में. अब क्या हो जाता है, जहां तक वहां पहुंच जाते हैं तब तक वो पूरे the fish, the aquatic life, entire thing, they go on feeding on it. They do not know, they cannot see. अभी एक जो प्लास्टिक का जो पैकेट है वो ऐसे नीचे चला जाएगा. It looks like a jellyfish. Imagine this in the water. It looks like a jellyfish. So fish आके इसको खा लेता है, खा लिया, पेट में चला गया, और इसको निकलना पेट से बहुत मुश्किल है. The same thing happens when you pack your leftover food material and you throw it into the bins. ये पूरा आपके पूरे कॉलोनी के में जो कॉमन आपका जो बिन्स होते हैं, ये डंप बिन्स होते हैं, वहां पे फेंक देते हैं लोग. कई सारे गाय आके खा लेती है. सो जब गाय खाती है ये, उनके पेट में प्लास्टिक चला जाता है. नॉट जस्ट गाय, बकरी खाती है, काउस खाते हैं. देयर आर सो मेनी एनिमल्स, बर्ड्स फीस्टिंग ऑन दिस प्लास्टिक्स. So basically it is very dangerous to throw these single use plastics into the environment, into the biosphere, because they are dangerous to the human, they are dangerous to the animals, they are dangerous to the aquatic life, they are dangerous for everything. Then you put them into the they all these find their ways onto the landfills. What happens, ये काफी organic matter and mixed waste होता है. So क्या हो जाता है, पूरा वो मीथेन गैस फॉर्म हो जाता है because of the biodegradation of the degradable waste. मीथेन गैस तैयार हो जाता है, फिर गर्मी बढ़ जाती है, पूरे वेस्ट की गर्मी बढ़ जाती है, सूरज तपता है, आग लग जाती है, fumes. Then again the toxic waste is out in the open, air pollution, everything, all kind of diseases, be it skin diseases, be it lung diseases, be it thyroid, be it infertility, everything you can have some kind of relation to these plastics and toxic fumes generated by them. Okay, so ये हुआ हम लोग को क्यों बनाना है, ये सब क्यों हम लोग को फेंकना नहीं है. Now let us come
back to our main focus, EcoBrick. Now, what is EcoBrick? Now, EcoBrick, for making an EcoBrick, what all do we need? The plastics which I showed you right now, wo plastics plus a PET bottle. PET bottle is available everywhere. हम लोग use करते हैं PET bottles को, so we can use these PET bottles. Again, the PET bottle has to be clean and dry completely. इसको देर लगती नहीं ड्राई होने में. Even for plastics to wash and just dry them, it doesn't take time. It is a matter of habit. एक हैबिट अगर आपके हाथ में लग जाएगी तो आपको इसको एक डबल काम मेरा हो रहा है ऐसा नहीं लगेगा. So you'll need this PET bottle. You will need the clean and dry plastics and one stick, any kind of strong stick to compact the plastic into it. I have used this kitchen में मेरे होता है ये, तो मैं यही use करती हूँ. आप लोग जो चाहे जैसा whatever is suitable, comfortable to you, you can use this. Okay. So now how to make an EcoBrick? अभी मैं दिखाती हूँ आपको ये. अब ये प्लास्टिक इसको मैं पूरा ऐसे रोल करके छोटा सा बना दूंगी. I will put it inside the bottle and I will compact this with the stick. See, that's about it. और इसमें और कुछ आपको अलग से कष्ट करने का भी नहीं है. There is no double काम, कुछ भी नहीं. And then you just put the button back, put the seal back. ये आपकी EcoBrick हो गई. अब आपकी EcoBrick ऐसे ही बन गई. अब सब बच्चे भी देखते हैं, सबको लगता है कि अरे वाह इतना इजी है, मैं और भरता हूँ और भरता. तो EcoBrick बदनाम क्यों हो गई है? EcoBrick बदनाम इसलिए हो गई है कि लोग इसका प्रयोग ठीक से नहीं कर रहे हैं. People are putting in all the recyclable plastics also into it. They are not filling it properly. They are not cleaning the plastics properly. And at times, just to make EcoBrick, they are hoarding more and more plastics. So that is the reason, you know, many people are like, आप plastic पूरा बढ़ा रहे हो. But ये plastic वैसे भी it is going to be there. First thing is रिफ्यूज. आप खाना कम करो. सबसे पहले प्लास्टिक्स का ये जो पैकेज स्टफ है उसका आप प्रयोग करना कम करो. बंद करना is a very strong term which I will be using, which I will not be using rather, because many why should we say बंद करो. वो सब सरकार जब करना है बैन लाएगी तब लाएगी. जब तक नहीं लाती है तब तक हम लोग के नारे तो नहीं लगाते बैठेंगे. जो है उसका हम लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे. So that is why first you yourself make a habit of using less. Refuse, reduce, reuse. ये भी प्लास्टिक रीयूज. ये इनफैक्ट ये इसमें ये जो ब्रेड का जो रैपर है मेरा, इसमें मैं धनिया पत्ती रखती हूँ, कड़ी पत्ता रखती हूँ. हफ्तों तक ये ताजा रहता है. So use these for vegetables. You can put them in the fridge and use them. Reuse करो. अगर ब्रेड नहीं खाते बेस्ट है. अगर खाते ही हो तो आप किसी को ब्रेड बनाना अगर बना सकते हो घर पर बनाओ. मैं खुद बनाती हूँ घर पर, लेकिन it is a tedious thing. I cannot keep baking all the time. So you cannot ask people just to change one thing just like that. So आप proportions में करो. Go in a transition. So reduce, reuse, recycle, rethink and then recycle. Because recycling is also again a process which involves lot of resources. It involves carbon footprints. It takes again, it's like a factory plant. So you should rethink before you always put everything for recycling. जितना use कर सकते हो, reuse कर सकते हो, repurpose कर सकते हो, उतना करो और उसके बाद आप recycling के लिए दे दो. और उसके बाद जो आपका पॉलिथीन रहता है वो साफ करके ड्राई करके ये बॉटल में आप भर दो. So that is what is EcoBrick all about. Okay? अब तक किसी को doubts आ रहे हैं क्या? Any thing I need to clear? Is there any doubt? Yes. So there's a question, Yogini, in the chat box. Pooja is asking, what about grocery packets like flour, masalas, rice, etc.? The packaging material they use. I will. जी मैं दिखाती हूँ आपको. See, I have this salt packet, Tata salt. Okay, brand name I shouldn't be talking. So ये नमक का पैकेट है. यहाँ पे आपको दिखेगा recyclable pack. Yeah. Okay. So you just have to check if it is recyclable. Please, आप recycling के लिए साफ करके रखिएगा. हाँ, तो ये आप साफ करके रख सकते हैं. These Amazon के पैकेट्स आते हैं. Amazon के पैकेट्स you can use them as grow bags also. They are strong packets. You reuse them, repurpose them.
और ये भी ये पैकेट है सूजी का, ये भी मैं साफ करके ये रीयूज के लिए देती हूँ। इको ब्रिक में वही जाएगा, वो एकदम जो खराब सा मतलब पतला सा पॉलिथीन जो होता है ना, वेरी आसानी से ऐसे फट जाता है, आसानी से फट जाता है ये। और ये स्विच का एक स्विच आया था, आई बॉट अ स्विच, वो स्विच वाज आल्सो पैक्ड इनटू दिस, आसानी से जो फट रहा है। सी, ये पैकेट सारे इको ब्रिक्स में जाएंगे, ये रिसाइकलिंग के लिए जाएगा। ये मसाला का जो पाउच है, ऑल दीज मसाला पाउचेस दे आर गुड क्वालिटी, थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक आपको, अगर यू कैन फील इट, अगर आप ऐसे टान के देखो, अगर वो फट रहा है तो वो बहुत खराब क्वालिटी का है, वो बॉटल के अंदर चला जाएगा। So so you're trying to say that the lowest quality of polythenes and the small bits of whatever type of polythene, they have to go in this eco bricks, correct? Correct. Okay. So अब बनाना कैसा है, अब तक everything is clear. Now I will just go one step ahead. Now when do you think your eco brick is ready? Okay, so अभी ये देखिए, ये पूरा thermocol sheets, thermocol sheets, I see thermocol cannot be used in eco bricks which are going to be used for further construction purposes or anything like that, because they will not impart that much of strength to the brick. It's light, it's porous, and फिर जितना भी आप प्रेस करो वो पूरा strength नहीं लेगा जो expected है in an eco brick. So thermocol is a no. I do not suggest to put thermocol into this, but if you are going to use this eco brick in your own place, आपका पर्सनल यूज में डेकोरेट करके यूज कर रहे हो तो आप इसमें डाल सकते हो, अदरवाइज यू डू नॉट, आई डू नॉट सजेस्ट to put thermocol balls into this. Okay, now we'll come to the strength. See, one more minute, Yogini, sorry to interrupt you. Shubha is asking, do you have to seal the cap after the brick is made? Yes, we do have to, because if we don't seal the cap, then it will be exposed to the weather conditions. Pani chala jayega. We don't want that to happen. So please secure the cap properly. Okay. That too we have to do with. Sorry. The sealing has to be done with the normal cap. You can just secure the cap like this, huh? Okay, no. She is asking, do we have to seal this cap? No. Just tighten the cap, right? No. Just एकदम tight बंद करके रख दीजिएगा. You don't need to do anything else. All right. Okay. So now can you hear the crackle sound? So this crackle sound of the brick tells you that the brick is not yet ready. It can eat more and more plastic. ये अभी तैयार नहीं है, इसमें और भी प्लास्टिक आप डाल सकते हो. तो ये crackling, what does the numbers beneath the PET bottle suggest? They do suggest about the value of the recycling. 1 to 4 are highly recyclable. 5 to 7 are sometimes recyclable, sometimes not recyclables. Okay. So ये जो है अभी I'll just finish this and then I'll get back to all the questions again. So इसमें the squeeze test जो होती है हमारी, every eco brick should pass the squeeze test. It shouldn't be squeezable. ये squeezy sound आना नहीं चाहिए इसको आप और भी stuff कर सकते हो जब तक ये पूरी तरह से strong हो. Even if you jump on the brick, it should not break, and it will not break if it is made properly. Now what is the weight of the brick? Now weight is also important. Now it is decided by Global Alliance, जो रोशनी जी जहाँ से है हमारी ये Global Alliance, EcoBrick का Global Alliance, they have decided that 0.33 grams per ml should be the density of the brick. Now what is it like? अभी simple terms में मैं आपको बताती हूँ. इसका weight 0.33 multiplied by the volume of the brick of the bottle. अभी ये मेरी 750 ग्राम ml की बॉटल है, तो ये 750 ग्राम ऑफ बॉटल मल्टीप्लाइड बाय 0.33, इट विल गिव मी समवेयर अराउंड 200 का करीब 200-230 तक इसका वेट होना चाहिए ग्राम्स. 200-230 ग्राम्स ऑफ वेट इसका होना चाहिए. लाइकली यू कैन जस्ट कैलकुलेट द वेट ऑफ द ब्रिक्स, तो आपको पता चलेगा कि आपको आपकी ब्रिक तैयार है कि नहीं. ओके, सो दिस इज व्हाट it is. All right, so weight आपका आप check करोगे, and if the weight is correct, then your eco brick is ready. All right, so this is about how to make eco brick. All right, so इसके बाद थोड़ा सा हम लोग
और आगे चले जाएंगे। अब मेरे पास इकोब्रिक्स बन गए। आपकी इकोब्रिक कितने दिनों में बनी? मेरी इकोब्रिक, एक इकोब्रिक भरने के लिए मुझे 2 महीने लग जाते हैं। So 1 लीटर की बोतल अगर मैं भर रही हूँ, तो it will take me more than 2 months if I follow all the 5 R's properly. Okay? So you have to go very slow. And how can you go slow? By following all the R's. Okay? There is no hurry to make the eco-brick. Please remember कि कभी भी सब कुछ माइंडलेसली प्लास्टिक्स भरते मत जाइएगा। जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स है उनको प्लीज रिसाइकिल कर दीजिएगा एंड देन यू fill it up. Alright, that was about filling the eco-brick. What can you do with the eco-bricks at home? घर में आपके खुद के आप क्या कर सकते हो? अभी मेरे घर में अब पूरे साल में अगर मैं 2 महीने में एक इको-ब्रिक भर रही हूँ, तो मेरी ऑलमोस्ट 6 बन जाएंगी इको-ब्रिक। So उससे मैं क्या कर सकती हूँ? I'll show you. I have made one stool. Okay, ये आपको दिख रहा है? ये एक स्टूल है which is made out of all the waste material which I had. इसमें 7 eco bricks मैंने डाली है and इसमें I have used a foam which had come as a packaging material और उसके ऊपर मैंने मेरा used cake board डाला है and इस पर मैं खुद बैठ जाती हूँ। So it is that strong. What I mean to say is it is that strong. And then you can make decorative eco bricks. इस पर ये बैठने के लिए भी ठीक है। Then if you have आपके अगर छोटे कभी कभार क्या होता है, छोटे भी बहुत सारे bottles आ जाते हैं, you can make a nice planter stand out of it. I think Sheetal ji has also made a nice planter stand out of it. So you can use stands and very different things you can. And I'm using it regularly and and it's rainy season, it's very useful for the plants to use that eco-brick planter. I can show it. Give me 2 minutes. So planters के लिए use कर सकते हैं, stools कर सकते हैं. Then it can be made as a small centerpiece also. Then मैंने decorate किए थे कई सारे eco bricks, but unfortunately I have gifted them all the bricks, and I do not have anything right now to show you. So I had decorated it with ropes, as in जूट की जो रस्सी आती है, और हमारे जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं उससे मैंने ये पूरा डेकोरेट किया था इको ब्रिक को। बहुत सुंदर लग रहा था। एंड सिंस आई एम इनटू बेकिंग एंड ऑल, तो ट्रेस डेकोरेट करके लोग चाहते हैं देना, तो मैं हमेशा इसके along with the sweets and cakes and all, I just put a small eco brick with it and it looks beautiful and it sends a message across कि आप क्या कर सकते हो ये प्लास्टिक का। So definitely ये क्या चीज आई, ये बॉटल क्यों पकड़ा दी योगिनी? So बॉटल क्यों पकड़ा दी, उसका आंसर is that please reduce, reuse, recycle and make eco bricks. That is why the bottle. Okay, so ये था मेरा eco brick के बारे में on what personal level you can do. And any questions? I think questions will take later, Sheetal ji. I think your Janki has actually asked some questions, relative questions along with. So what I was asking is, Yogini, any specific size shape of bottle to take care of? Any bottle can be taken, like the jars also, no? वो बासमती राइस के आते हैं, ब्राउन राइस के jars आते हैं. Can we use the jars or only PET bottles? See, these jars and all we can use for many other things also. So these PET bottles, usually we are using PET bottles so that it is easy for you to decorate them also. It is easy for you for the construction also. So अगर आप community के हिसाब से, I am sure Roshni ji will be guiding us with all that. But for that you need a same size के, same volume के eco bricks. So all that you need to check upon. All right. Okay. So jars and all, I don't think so. Jars we can recycle also, and of course, yes, PET bottles also can be recycled. But we are using a few. When we encourage vertical gardens, why not encourage plastic eco bricks? So this is my eco brick stand that I was talking about. So this was I've made last year. See, you can see it's 7 bottles that I've used, and the same size bottle, and I have not done anything with it actually. I've just tied it with a jute rope, and I use this eco brick stand for my plants. Wonderful. So this is the best, and this is out of 1 year. So I think I'm following ours, Yogini. Yes,
Definitely, definitely. Yeah. Yogini, I have a Yeah. query. Do these Haan ji. attract any bacteria or maybe some kind of fungus, since plastic is prone to bacteria? Plastic is prone to bacteria if it is contaminated with any kind of biodegradable material. Okay. Okay. So if you don't clean it properly, it will definitely attract, and then it will generate methane gas, which ultimately will burst the bottle. So it Correct. is always advised that you need to have a very, very clean plastic. You need to have a very dry ye bottles, and you make your eco bricks. Thoda sa kasht hai, but that much we can do for our mother Yeah, nature. definitely. And one more query in addition to that. Suppose today I have, let's take few plastics. So today I can put in, or I have to collect all plastics together. You and can go just on. go on आप It's a जैसे आपको continuous समय में. process. What I do is it is a Sunday therapy for me. Okay. Yeah, Thank you so much, Yogini. most Great welcome. session. And do not forget to compact it with the stick, because you start compacting right from the beginning. बाद में नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. And if your Okay. plastics are big, like आपके बड़े pieces हो, तो you can just cut it with the scissor also. Right. Okay, make small bits of it and put them into the bricks. Thank you. Most welcome. Yeah, so thank you so much, Yogini, for showing the way that how we can use that single-use plastic, discarded single-use plastic to make eco bricks. And someone has actually asked what are the uses of that. We will definitely come at the end and we will discuss it कि इसके और क्या-क्या uses हम लोग कर सकते हैं. So now let's move ahead with the Miss Roshni Rai today. रोशनी जी, आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? फ्रॉम वेयर आर यू राइट नाउ? Hello everybody. Yeah. Right now I'm in Kalimpong. Kalimpong. Okay. So Roshni ji is from Kalimpong. Yeah. And let me introduce Roshni ji to you all first. So Roshni ji is actually by profession, she is an advocate. She's done her master's in laws, and by passion, she is an ultra marathon runner. That actually I'm very much impressed. Yeah. Just Thank a you. moment. Yeah. Yeah, thank you, Sitalji, for giving me this opportunity. Good Yeah, afternoon, everybody. Yeah. And, thank you, Yogini ji, for amazing presentation on EcoBrick. How to make Thank it. you, Roshni ji. Yeah. So, Yeah, I have welcome Roshni to our ji, my wiki. introduction has not finished yet. मुझे आपको और introduce करना है. Give me few more minutes. Yes. So by passion, she is an ultra marathon runner, or she is actually a motivational speaker. She speaks at many conventions in past. She is a multiple award winner actually, and she is the founder of Run with Roshni Foundation, where she is supporting the underprivileged Gorkha runners from Darjeeling. And she's an author. Unki book hai Mountain to the Ocean, Run with Roshni, and that was published in 2015 from Mumbai. And she is a goodwill ambassador of Everest Marathon. So ये तो सब रोशनी जी की बहुत काबिलियत है, and she is a versatile personality actually. But why we are having Roshni ji with us today on this platform of Wiki and on this special day of World Nature Conservation Day? Because Roshni ji is a certified trainer at Global EcoBrick Alliance. So जो हमको योगिनी ने बताया अभी कि हम पर्सनल लेवल में कैसे प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करके रिसाइकलिंग जो नहीं होता है उस प्लास्टिक के कैसे हम लोग इको ब्रिक्स बना सकते हैं. रोशनी जी इज टेकिंग अस लिटिल मोर फॉरवर्ड इन दिस सब्जेक्ट कि आज एक कम्युनिटी लेवल पे आपको अगर ये काम करना है और एक सर्टिफाइड ट्रेनर बनना है तो आप कैसे इसके लिए काम कर सकते हैं. सो वेलकम रोशनी जी टू आवर शो टुडे, and it is our pleasure to have you. And now the platform is yours. Just spread the awareness and just show the work that you are doing with Global EcoBrick Alliance. Yeah. Thank you so much. Thank you, Sitalji. First of all, thank you for giving me this opportunity. And Global EcoBrick Alliance जो है ये profit making organization भी नहीं है, NGO भी नहीं है. This is a art enterprise. This is especially formed for ecological harmony के लिए बना हुआ organization है.
एंड ये स्टार्ट किया है रशेल मेयर, वो कनाडा से है बट करेंटली इंडोनेशिया में रह रहा है, और उन्होंने बहुत रिसर्च करके ही ग्लोबल इकोब्रिक अलायंस बनाया हुआ है। एंड इंडिया में बहुत सारे लोग लाइक प्रोजेक्ट्स चल रहा है इकोब्रिक्स के लेकर। जैसे योगिनी भी बता रही थी कि लाइक कैसे पीपल आर पुटिंग अनवॉश्ड विदाउट क्लीनिंग प्लास्टिक लगाकर फंगस फॉर्म होकर बहुत सारा प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम भी आ रहा है। एंड बहुत जगह से लोग बोलते भी है कि इकोब्रिक इज नॉट अ सोल्यूशन, बट वो प्रॉपरली नहीं धोकर प्लास्टिक लगाने से भी बहुत प्रॉब्लम हो गया है पास्ट में। तो इसके लिए इकोब्रिक्स बदनाम भी है बोल सकते हैं एक तरह से। एंड ये इकोब्रिक्स बनाने के लिए वो प्लास्टिक प्रॉपरली धोना एकदम जरूरी है। हम लोग सब लाइक हमारे कंसेप्ट में ग्रो अप हुए हैं कि यूज एंड थ्रो, यूज करो फेंक दो, और प्लास्टिक कौन धोएगा। तो प्लास्टिक धोने के लिए लाइक सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग। अभी कोई बोल रहा है तो मेरे को भी लाइक जब ग्लोबल इकोब्रिक अलायंस का एक ट्रेनर है राइट नाउ इंडिया में, हम लोग 4 सर्टिफाइड ट्रेनर हुए हैं, और हम लोग बहुत सारा लाइक प्रॉपर वर्कशॉप एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ग्लोबल इकोब्रिक अलायंस GEA के वर्कशॉप भी करवा रहे हैं। और अभी इंडिया में बहुत बढ़ रहा है प्रॉपर सर्टिफाइड ग्लोबल इकोब्रिक अलायंस का ट्रेनर। योगिनी जी ने भी एक वर्कशॉप कर चुका है, बट उनका इकोब्रिक्स जब फुल होएगा तभी सी विल बी एबल टू पुट इट लॉग करके सी विल गेट द सर्टिफिकेट। बट प्रैक्टिकली सी इज ऑलरेडी अ ट्रेनर, वो सर्टिफिकेट ही नहीं मिला है उनको। सी इज डूइंग अमेजिंग ट्रेनिंग ऑल अक्रॉस। और ग्लोबल इकोब्रिक अलायंस का जो भी प्रिंसिपल्स है लाइक बहुत ही अच्छा है। जैसे हम लोग प्लास्टिक के बारे में बोलते हैं तो अभी हम लोग प्लास्टिक को डायरेक्टली रिलेट करते हैं, इट इज एज अ ट्रैश वेस्ट ओनली। बट प्लास्टिक के बिना हम लोग बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी ये मोबाइल हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत सारे आप लोग लैपटॉप से भी ये मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, उसमें भी तो कितना सारा प्लास्टिक्स यूज हुए हैं सुबह से। जैसे टूथब्रश का एग्जांपल दे रहे थे योगिनी जी, टूथब्रश सुबह उठते ही हम लोगों को लाइक अपना खुद का ग्रूमिंग के लिए टूथब्रश चाहिए, कंघी चाहिए, सब तो प्लास्टिक से ही बना हुआ है। जैसे हम लोग लिखते हैं डॉट पेन, एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ प्लास्टिक। तो विदाउट प्लास्टिक तो हम लोग लाइक जी भी नहीं सकते, ऐसा है। बट जब भी प्लास्टिक का बात आता है तो हम लोग वी रिलेट इट टू द प्रॉब्लम्स ओनली, बिकॉज हम लोगों को पता नहीं कि प्लास्टिक कैसे डिस्पोज करे। प्लास्टिक को यूज करके यूज एंड थ्रो इतना प्रोमोट हो चुका है, प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज उसी से प्रॉफिट बना रहा है। एक बार यूज करो, थ्रो कर दो, फिर दे विल मैन्युफैक्चर। एंड इसके लिए हम लोगों को अभी इकोब्रिक्स का मैं वर्कशॉप अटेंड किया तो जब ट्रेनर बोल रहा था कि प्लास्टिक धोकर इकोब्रिक्स बनाओ, एंड आई वाज वंडरिंग कौन धोएगा प्लास्टिक इतना बैठकर, लाइक फेंकना इज सो इजी, लाइक आई ग्रू अप विद दैट कांसेप्ट। तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, बट मेरे को कुछ करने का था ये इकोब्रिक्स के लिए। तो लास्ट ईयर पूरा लॉकडाउन के टाइम पे आई स्टार्टेड कलेक्टिंग इकोब्रिक्स, सॉरी प्लास्टिक्स। तो 1 महीने का प्लास्टिक मेरा एक पूरा 1 sack फुल ऑफ प्लास्टिक हो गए थे। देन आई वॉश्ड इट एंड आई ड्राइड इट एंड आई मेड प्रॉपर इकोब्रिक्स। तो उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर एंड मोर। तो फिर जो ट्रेनर था उन्होंने ही हेल्प मी टू गेट सर्टिफाइड एज अ सर्टिफाइड इकोब्रिकर। तो अभी क्या हुआ कि लाइक आदत सा बन गया। योगिनी जी भी बता रहे थे कि अभी इकोब्रिकिंग इज नॉट अ प्रोजेक्ट, इट इज अ लाइफ स्टाइल। और मैं कहीं पर भी जाकर कहीं पर भी लाइक पहले तो रिफ्यूज रिड्यूस वो सब तो है, बट बहुत जगह पर हम लोगों को यूज करना ही होता है। लाइक कहीं पर भी, मैं घर से बाहर भी कहीं पर भी लाइक प्लास्टिक कोई भी यूज हुआ तो आई टेक इट होम। अभी का भी धोने का टाइम नहीं है तो लाइक आई डू इट इन वीकेंड्स। अभी ऐसा लाइफ स्टाइल ही हो जाता है वंस यू स्टार्ट मेकिंग इकोब्रिक। तो इकोब्रिक ग्लोबल इकोब्रिक अलायंस का मेन प्रिंसिपल है कि आयु प्रिंसिपल में बना हुआ है। आयु प्रिंसिपल इज लाइक अपसाइकलिंग। जब तक ये साइकिल ऑफ द नेचर के साथ साथ जैसे बनता लाइक हम लोग नेचर में देखेंगे तो कोई भी एक प्लांट हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो वो बड़ा होकर वो मर भी जाएगा, फिर लाइक अपने जगह पर वो डीके होकर इट बिकम्स अ मैन्योर।
बट हम लोग प्लास्टिक का रिसाइकलिंग के बारे में हम लोग बहुत बोलते हैं। रिसाइकलिंग के लिए हम लोग जब सेंड करते हैं प्लास्टिक, तो वहां पर बहुत सारा कार्बन प्रिंट हो रहा है, एंड छोटे छोटे प्लास्टिक योगिनी जी बता रहे थे वो मिस आउट होता है। तो नेचर साइकिल ऑफ नेचर का जैसा नहीं हो रहा है। रिसाइकल तो बोलते हैं, एग्जैक्टली इट इज नॉट फुल साइकिल। और फिर 7 टाइम्स ही एक प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है। उसके बाद जैसे योगिनी जी ने इतना अच्छा एग्जांपल दिखा रहा था कि बहुत सारा प्लास्टिक है विच कैन बी नो मोर रिसाइकल, और वो क्या होता है अपना बायोस्फीयर में एंड अप होता है। तो ये जो आयु प्रिंसिपल जो है उसमें इगुरुत कम्युनिटी है, ट्राइब्स है फिलीपींस में। तो उन लोगों को ऑब्जर्व किया, ये जो प्रिंसिपल है ग्लोबल इकोब्रिक अलायंस का, उन लोगों का कम्युनिटी में क्या होता है कि एवरीथिंग जो एक काम खत्म हो गया उस चीज का, तो फिर दूसरे जगह में हमारा इंडियन कम्युनिटी में भी देखा जाए तो कोई हॉर्लिक्स का बॉटल हॉर्लिक्स खरीद लिया तो हॉर्लिक्स खत्म हो जाएगा तो अचार के लिए वो बॉटल यूज होता है। एक्चुअली हमारा इंडियन कम्युनिटी में भी है बहुत सारा रिसाइकलिंग हम लोग करते हैं। जैसे यूज एंड थ्रो तो अभी 20-25 साल से ही हम लोगों को सुनने में आया है, यूज करो थ्रो करो। बट हम लोगों को लाइक हम लोग पीछे जाकर हमारा कम्युनिटी में भी देखेंगे तो ऐसा ही रीयूज होता था। बट अभी तो हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो गया है यूज एंड थ्रो से। बट वो इगुरुत कम्युनिटी में आयु प्रिंसिपल अभी भी था, बट जब प्लास्टिक इंट्रोड्यूस हो गया तो उन लोगों को कम्युनिटी में वो रीयूज करके जब तक वो अपने आप लाइक नेचुरल थिंग ऑर्गेनिक थिंग अपने आप वो विलीन होकर जाता है, ऐसा नहीं हो रहा था। प्लास्टिक इतना इनफ्लो हो रहा था एंड इट वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो उसको कैसे क्या हल करे, तो ही दिस रशल स्टार्टेड फॉलोइंग वो आयु प्रिंसिपल का ही टेक्निक। एंड इकोब्रिक बनाने के लिए पहले तो बहुत सारा टाइम लगा उसको। 2010 से स्टार्ट किया था। पहले तो ही वाज नॉट क्लीनिंग प्लास्टिक, और बाद में प्लास्टिक का वो इकोब्रिक्स ब्रस्ट भी हो रहा था, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर बाद में आयु प्रिंसिपल को प्रॉपरली फॉलो करके वॉश करके वो करने में, तो हम लोग इकोब्रिक प्लास्टिक को सिर्फ एज अ वेस्ट वी आर गेटिंग लाइक वी आर कनेक्टिंग टू, बट प्लास्टिक नहीं है तो बहुत सारा काम नहीं कर पाते हैं। तो उसने जब इकोब्रिक्स बनाया तो ही अंडरस्टूड कि इट इज द वंडरफुल रिसोर्स विच वी कैन मेक आउट ऑफ यूज्ड प्लास्टिक को। एंड दूसरा वो आयु प्रिंसिपल तो वो अब हो गया। देन नेक्स्ट में प्रिंसिपल है क्रेडल टू क्रेडल करके, जो हमारा लाइक एवरीथिंग इफ वी लुक अराउंड, हमारा जर्नी इज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव होता है। बट एक बार इकोब्रिक बन गया ना, that ecobrick can be used for 1000 of years because plastic decompose होने में 1000 of years लगता है। तो वो इकोब्रिक बनाने के बाद if we make it properly, तो we don't use it with cement because कोई एक वॉल बना लिया, वो वॉल ने हम लोगों को 5 साल काम दिया, तो उसके बाद वो वॉल बिगाड़ना पड़ा, तो सीमेंट है तो इकोब्रिक टूट जाएगा, तो फिर अंदर रखा हुआ प्लास्टिक बिखर जाएगा, तो फिर हम लोगों को दूसरा प्रॉब्लम होएगा। तो इको ब्रिक बनाकर हम लोगों को ऐसा छोटा स्मॉल 1 स्टोरेज बिल्डिंग, छोटा छोटा घर ऐसा हम लोग बना सकते हैं। उसके लिए हॉट बिल्डिंग टेक्निक अपनाया है ग्लोबल इको ब्रिक अलायंस ने। उसके लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग होता है एंड वी हैव ओनली 1 ट्रेनर फ्रॉम इंडिया, हिज नेम इज असीम खवास। तो हम लोग ऊपर से मिट्टी से इको ब्रिक को सब कवर कर देंगे, सो दैट हम लोगों को सबको पता है कि आपका घर में कोई भी प्लास्टिक का सामान हो जो बाहर सन में एक्सपोज हुआ हो, तो आफ्टर 1 year 2 years वो अपने आप टूट जाएगा, माइक्रोप्लास्टिक बन जाएगा, छोटा छोटा प्लास्टिक बनकर इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो वैसे ही हमारा इको ब्रिक भी सन में डायरेक्टली एक्सपोज हो जाए, माइक्रोप्लास्टिक होगा। लॉन्ग टर्म यूज के लिए हम लोग जब भी इको ब्रिक्स का कुछ स्ट्रक्चर, आउटडोर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो और यूज करते हैं। और जैसे अभी योगिनी जी और शीतल जी ने भी अपना मॉड्यूल दिखाया, दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म यूज। आप घर में आपका 1 साल का प्लास्टिक से 1 साल का इको ब्रिक्स, जितना सारा प्लास्टिक है उससे बना हुआ इको ब्रिक्स से आप एक छोटा सा इतना टूली बना सकते हो। और हम लोग लाइक एज अ कम्युनिटी ऐसा सबके घर का प्लास्टिक इको ब्रिक्स बनना शुरू हो जाएगा, और अपने अपने घर में 5-6 इको ब्रिक्स बन गया साल में,
तो हम लोग बहुत सारा इको ब्रिक्स इकट्ठा करके हम लोग अर्थ बिल्डिंग टेक्निक को अपनाकर आउटडोर स्ट्रक्चर कुछ बना सकते हैं, और हमारा एक भी प्लास्टिक बाहर बायोस्फीयर में जाकर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। और यहाँ पर जो हम लोगों को जो ट्रेनिंग मिल रहा है ग्लोबल इको ब्रिक अलायंस में, इट इज लाइक ऑलवेज कंटिन्यूअस लर्निंग। तो हम लोग इको ब्रिक्स इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, ऐसा है सिर्फ हम लोग मुंह से बोलकर किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते हैं। इट इट फॉलोज मंडालिक प्रिंसिपल। मंडाला हम लोग देखेंगे तो हमारा एंसेंट रिलीजियस उसमें स्ट्रक्चर्स में, स्पेशली बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर में वो राउंड जो स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। तो हमारा ये इको ब्रिक्स का जो भी जर्नी है, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम, मैंने शुरू किया अपना यहाँ पर गांव में, मेरा कम्युनिटी में। तो मेरे से शुरू होकर स्लोली इट गोज टू कम्युनिटी, और मेरे को देखकर ही we have a saying that if you want to see a change, be the change. तो इको ब्रिक्स के लिए भी हम लोगों को एग्जाम्पल होकर ऐसा हम लोग करना शुरू करेंगे। तो जो हम लोग अभी रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को वेट कर रहे हैं, वहां पर भी बहुत सारा शॉर्टकम्स है रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज का भी, एंड मोस्ट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट का मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज दे आर सोल्यूशन से ज्यादा दे आर फोकस्ड इनटू प्रॉफिट मेकिंग थिंग। तो हम लोग ही एग्जाम्पल होकर इफ वी स्टार्ट रिफ्यूजिंग प्लास्टिक एट द फर्स्ट प्लेस, एंड जो भी प्लास्टिक हम लोग एकदम रिथिंकिंग करके भी एकदम मिनिमम प्लास्टिक हमारे लाइफ में आ रहा है, तो इफ वी स्टार्ट मेकिंग इको ब्रेक्स, तो हम लोग वी विल बी डूइंग ग्रेट थिंग फॉर द प्लैनेट अर्थ। हम लोग एक्चुअली प्लैनेट को तो रिवाइव होने के लिए दे सी हैज लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर, वो हम लोगों को मिटाकर सी कैन रीहील रिवाइव, बट ये हमारे लिए खुद के लिए, खुद को बचाने के लिए दिस इज one of the solution is there। and हम लोग का ग्लोबल इको ब्रिक अलायंस का जो वर्कशॉप है दैट इज सर्टिफाइड वर्कशॉप। आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड है तो another workshop is scheduled in September। और हमारा ये जो भी इको ब्रिक हम लोग बनाते हैं, योगिनी जी ने बता दिया 0.33 ml पर वॉल्यूम ऑफ द बॉटल हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है। दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 0.33 टू 0.36 अभी इंक्रीज हुआ है। दैट ऑल ट्रेनिंग वी डू इन द वर्कशॉप। मैं आप लोगों को वो चैट में मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी उसके बारे में। एंड अब किसी का क्वेश्चन था यूजेस ऑफ इको ब्रिक्स, आई होप वो लॉन्ग टर्म यूज एंड शॉर्ट टर्म यूज है उसका हो गया होगा, आपको आंसर मिल गया होगा। एंड somebody was asking इको ब्रिक्स जार्स में हम क्यों नहीं बनाते हैं। तो जार बड़ा बड़ा 20 लीटर्स तक का भी इको ब्रिक्स बना रहा है यूके का इको ब्रिकर्स, बट इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हम लोगों का वेट करना होता है इको ब्रिक। तो किसी को प्रॉपर वेट मिलने के लिए प्लास्टिक के बजाय कुछ डाल भी सकता है टू रीचेक। हम लोग एक इको ब्रिक बनाकर ग्लोबल इको ब्रिक अलायंस का गो ब्रिक ऐप है, उसमें इट्स काइंड ऑफ फेसबुक फॉर मी, हम लोग फेसबुक पे अपना फोटो सेल्फी अपलोड करते हैं, बट वहां पर गो ब्रिक में जो भी इको ब्रिक बनता है हम लोग अपलोड करते हैं, वो वैलिडेट होता है। 3 इको ब्रिकर्स कैन बी फ्रॉम एनीवेयर इन द ग्लोब, दे विल चेक आवर इको ब्रिक एंड वैलिडेट करता है, उसको AES प्लास्टिक बोलता है, ऑथेंटिकेटेड सिक्वेस्टर ऑथेंटिक इको ब्रिक प्लास्टिक बोलते हैं। दैट इज it is not only sequestering plastic, but we are sequestering carbon dioxide also by making eco bricks. So all the calculations are there. So just to authenticate validate eco bricks जार में ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वैलिडेट करने में प्रॉब्लम होएगा। सो whenever we are making eco bricks it has to be a transparent bottle। सो कोई भी देखेगा तो अंदर क्या है, प्लास्टिक डाला हुआ है, प्लास्टिक कैसा है वो मालूम होना चाहिए। इसके लिए ट्रांसपेरेंट बॉटल में ही होना है। एंड जार्स को जैसे योगिनी बता रही थी रिसाइकलिंग में भी भेज सकते हैं। तो आपको मैं इफ ये शेयरिंग में मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ तो कैसे हमारा ईच एंड एवरी इको ब्रिक इज गेटिंग अपलोडेड, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ 2 मिनट।
योगिनी, कैन यू कंफर्म मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं रोशनी जी, आई कैन नॉट सी. एक सेकेंड ना, मैंने ना शेयरिंग वो करके आई जस्ट वांटेड टू शो व्हाइट बोर्ड स्क्रीन में जाना चाहिए मेरे But को. you can share the screen because I have made you co-host in the Yeah. initial, so you can share the screen. Yeah, I'm trying to go for it, but looks like maybe because of my slow internet, it's not happening. Okay. ओके सो वहाँ पर लाइक ग्लोबल इकोब्रिक अलायंस का जब भी वर्कशॉप होता है, हम लोग गोब्रिक ऐप हाउ टू यूज एंड जैसे मेरा कालिम्पोंग का कम्युनिटी है, कालिम्पोंग इकोब्रिकर्स, वी आर ऑलमोस्ट 160 इकोब्रिकर्स. तो 160 इकोब्रिकर्स ने अबव 500 इकोब्रिक्स बनाकर 70 kg ऑफ प्लास्टिक वी हैव सेव फ्रॉम गोइंग इनटू बायोस्फीयर. अभी हम लोग कोई भी अभी आउट बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जाएंगे तो वो आउट बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाकर हमने प्लास्टिक की तरह प्लास्टिक बायोस्फीयर में जाने से बचा लिया. दैट वी ऑल लाइक गेट द साइंटिफिक डाटा ऑफ एवरीथिंग. So if anybody is interested, I will be sharing in the chat the next about registration link for next Global Ecobrick Alliance का workshop. उसमें आप लोग वर्कशॉप अटेंड करने के बाद इकोब्रिक बनाकर लॉग इन करोगे तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट यू विल बी गेटिंग. एंड आपको इंटरेस्ट है तो वी विल बी सपोर्टिंग ट्रेनर बनने के लिए भी, क्योंकि इंडिया में बहुत कम है ग्लोबल इकोब्रिक अलायंस का ट्रेनर. एंड छोटे छोटे बच्चे भी ट्रेनर बन सकते हैं. जैसे 2 दिन पहले ही इंडोनेशिया का 11 years old गाय ही बिकेम अ ट्रेनर. तो हम लोग बच्चे लोगों को और इंस्पायर कर सकते हैं एंड दे विल गेट दे विल गेट टू लर्न विद द टीम, ग्लोबल टीम के साथ, यूके का टीम, इंडोनेशिया का टीम, स्कॉटलैंड का टीम से भी काम करने का उन लोगों को मौका मिलेगा. सो मैं आप लोगों को वो शेयरिंग करती हूँ लिंक यहाँ पर चैट बॉक्स में, और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, आप लोग पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच. Yeah, thank you so much, Roshni ji, for sharing so much intricate knowledge about ecobricks and its uses in community as well. That was more required as well, because Yogini had explained so very well to make an ecobrick, but then what's the use of ecobrick? I think you have made it so clear. There are few questions here, Miss Roshni. Yes. Someone was asking that does it not emit harmful rays in atmosphere, because when the ecobricks, if we make walls, after all it's plastic, right? Yes. इसके लिए तो हम लोग मिट्टी से कवर कर देते हैं. लाइक इट्स अभी तो 30-40 years ही हुआ होगा कि गांव बस्ती में भी सबका घर सीमेंट का बनना शुरू हो गया. पहले मिट्टी का घर बनता था, और मिट्टी लगाने से पहले हमारा इधर दार्जिलिंग कालिम्पोंग के घरों में बैम्बो का वो स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर से मिट्टी से लगाते थे. सो सेम टेक्निक लगाकर अंदर इकोब्रिक का वॉल होएगा और बाहर से हम लोग मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देंगे, सो दैट डायरेक्ट सनलाइट में हमारा इकोब्रिक एक्सपोज ना हो. So it must be controlling the temperature inside the 4 walls also, because we are using the mitti. Yeah, मिट्टी से ना क्या होता है कि वहां पर पोरस होता है. एंड देयर आर सम लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स डन बाय इंडोनेशिया का टीम. सो हम लोग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग तो नहीं बना सकते हैं. 1 स्टोरेज छोटा सा हॉट 1 रूम का हट ऐसा बना सकते हैं. एंड मिट्टी में क्या होता है, पोरस होता है, वहां पर हवा का आना जाना रहता है. और मिट्टी का घर में आपको पता नहीं, लाइक इट इज ठंडा में गर्मी देता है, गर्मी में मिट्टी के घर के अंदर ठंडा होता है, बिकॉज मिट्टी इज लाइक वो पोरस होता है. सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम. ये इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुका है. And it must be stronger, and endurance must be higher than the usual kacha house where our villagers live, right? Yes, and even if it is like it remains for 5 years, तो वो वॉल बिगड़ भी जाएगा, तो हम लोग मिट्टी हटाकर इकोब्रिक्स वैसा का वैसे दूसरा स्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं. यदि हम लोग सीमेंट के साथ यूज करेंगे तो सीमेंट की वजह से इकोब्रिक टूटने का डर है.
बट मिट्टी के साथ यूज कर रहे हैं तो हम लोग रीयूज कर सकते हैं. That's why cradle to cradle, the principle we are following. Okay, okay. Lifespan of EcoBrick, somebody I just saw in the screen, plastic का हम लोग बोल रहे हैं कि plastic takes 1000 years to decompose. तो EcoBricks is entirely made out of plastic. तो EcoBrick का भी life span 1000 years ही होना चाहिए. Okay. And Manjula ji was asking, like, what is the risk of EcoBricks in fire? Like, Okay. जो योगिनी जी बता रहे थे, डेंसिटी इकोब्रिक का मेंटेन करना 0.33 ml per volume of the bottle. One main reason is for making it fire resistant. जैसे हम लोगों का like you know फर्नीचर्स बनते हैं वुड से, घर भी बनते हैं वुड से, वुडन घर बनता है. तो in given some circumstances वो आग लग गया तो सीमेंट का घर भी जल जाएगा. बट वो वुडन स्ट्रक्चर को आग पकड़ने में 30 सेकेंड लगता है. इफ प्लास्टिक को तो बहुत जल्दी आग पकड़ जाता है, बट हम लोग एकदम फर्म इकोब्रिक 0.36 ml पर वॉल्यूम ऑफ द बॉटल वो डेंसिटी से बनाएंगे. इट ऑल्सो टेक्स 30 सेकेंड टू कैच द फायर. Oh, okay, okay. That's why this ratio is very important. That is the main reason why we have to maintain the proper density of the ecobricks. Okay. So someone is asking, what was the 5-year span you were talking about? Can you please enlighten again? 5 Sorry? hours, Janki ji. I think there's some confusion. I was talking about the 5 hours. Yeah, what not was the years. 5 Okay. hours. Refuse, 5 hours. reuse, Okay, okay. recycle, And rethink. rethink. ये 5 hours, Yes, yes. not Hmm. years. Okay. And one more thing I would like to add to this, अभी जो रोशनी जी ने इतने अच्छे से explain किया, like SIP में मतलब students, हम लोग जो students के साथ जो SIP program करते हैं, so they've been working on these eco bricks in their villages. अभी lockdown के कारण वो colleges में नहीं जा पा रहे, तो अपने अपने village में like earth building materials के साथ they have रोशनी जी used गोबर भी use किया है. जैसे पहले गोबर की दीवारें बनती थी, they have used mud and gobar to make walls and huts. Like I saw a question if you can make huts out of it. तो ये eco bricks से छोटे छोटे huts बनाए हैं उन्होंने storage के लिए अपने farms में. So that is also there. And I read one question regarding the rays it emits. So what happens? See, all these plastics, ये जो एकदम low grade plastics है, ये photo degenerate होते हैं, ये ज्यादा emit करते हैं सारे toxins and microplastics and everything. These are responsible. These can be packed into one bottle, one PET bottle of 1 liter. 100 square feet पे जितने फैले हुए होते हैं, वो सारे आप compact कर सकते हो in 1 liter of bottle. So आप emissions कितने कम कर रहे हो, आप imagine करो. So how much, even one eco brick, if you throw this into a dustbin, then also you are doing a great thing for the environment. So please, everybody, please do these eco bricks, make eco bricks, but mindfully. अपना मतलब जो भी आपको जो points बोले गए हैं important को follow करके आप eco bricks बनाओ. कोई emissions, कोई rays, अब if you just cover it the entire thing with मिट्टी से पूरा cover हो जाएगा, फिर इससे क्या emit हो जाएगा? कुछ नहीं emit होगा. There's one more question in Facebook, Yogini. Hanji. Someone is asking that as we are regular travelers all around, in and out of India, we receive so many complimentary toiletries, like, you know, small shampoo, conditioner bottles. Are they recyclables? Like, they are so small. Yeah, do we need, how to discard them? That's a question. The bottles definitely are recyclable, I guess. The bottles Okay. are recyclable because they are made of a good quality plastic. Even these PET bottles are recyclable. I am not saying that these are not recyclable. The bottles are recyclable. But कितने recycle होते हैं ये भी आपको सोचना चाहिए. और आप अगर travel करते हो तो एक छोटा सा bottle आपको कितना लगता है? आप हमेशा you will not have that much of time to, you know, do एकदम बढ़िया से shampoo and conditioner, carry your own छोटा सा thing. छोटा सा bottle. Exactly. हाँ. That's the main तो thing. वही Reduce the Yeah. use of plastic. Correct. Why just refuse? जहाँ हो सके उतना ज़्यादा refuse करो, reduce करो. True. Even I would like to share
that HUL has opened that ATM sort of, the Correct. refillable outlets that Refills you of can refill your shampoos shampoos and and everything. conditioners at those counters. That's a real Handy. nice welcome motive. Okay, somebody Fifty- is asking how to be in touch with me. I am sharing EcoBrick Global EcoBrick Alliance का इंडिया के लिए EcoBrick इंडिया करके पेज है, उसका मैं लिंक आप लोगों को यहाँ शेयर कर रही हूँ चैट में। आप लोग वहाँ उसमें मैसेज करेंगे तो हम जितना भी ट्रेनर है इंडिया के, हम लोग 4 ट्रेनर्स, हम लोग ही एडमिन है। आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप लोग वहाँ पर EcoBricks इंडिया के पेज में मैसेज लिख सकते हैं आप लोग। And I have shared my number. Whoever wants to get in touch with me, and we are always there for EcoBricks. Nahi, Roshni ji? Yes, yes. And because of eco-breaking, I'm getting to getting in connection with amazing people. And for me, eco-break is like a lifestyle, and it is like, spiritual journey. Like, it gives you so much of satisfaction. Yogini bata rahe the ki weekend therapy hai. Actually, it is. हम लोग जब भी वर्कशॉप करते हैं, बहुत सारे लोगों का they are coming and sharing कि it is indeed a spiritual thing for them. हम लोग अभी नहीं करने के लिए सोचते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग है, कौन करेगा, बट एक्चुअली आप जब करोगे ना, आप लोगों को एवरी वीकेंड करने के लिए EcoBricks ही बुलाएगा, जैसा ऐसा होता है। प्लास्टिक कम पड़ गया तो अरे EcoBrick करने के लिए प्लास्टिक नहीं है काइंड ऑफ। और मैं रास्ते में से भी बॉटल उठा लेती हूँ, पेट बॉटल, जैसे अभी 250 ml का स्टिंग बॉटल बहुत मिल रहा है यहाँ पर कालिम्पोंग का इसमें, एंड आई गो फॉर रनिंग एवरी मॉर्निंग, तो कभी कभी मैं पूरा 5-6 बॉटल उठा कर लेकर आती हूँ रास्ते से। और प्लास्टिक भी ऐसा पड़ा हुआ, साफ प्लास्टिक अभी अभी फेंका हुआ प्लास्टिक है, तो आई जस्ट कलेक्ट दैम just to make EcoBricks. So it is like doing seva to Mother Earth. Yeah, I did the same thing, because last 6 months I have attended 2 marriages, और वहां पे तो सब जगह रूम में ही बॉटल्स मिलती है हम लोगों को, तो वो सब बॉटल्स मैं साथ में वापस लाई हूँ। तो मेरे घर में बोल रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं बोली मैं बाहर से तो बॉटल खरीदती नहीं हूँ, हाउ विल आई मेक माय EcoBricks, आई नीड बॉटल्स। तो वो शादी में से मैं बॉटल्स घर पे लाई हूँ जो रूम में मिलती है। सो समटाइम्स इट लुक्स वियर्ड बट इट्स एक्चुअली थेरेपेटिक, जैसा हम लोग रोशनी जी और योगिनी ने बताया, इट्स एक्चुअली थेरेपेटिक। आप करने लगेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। I have a query For which I'm the unable to session, type. yeah. I have a query, like I Yeah. run a farm where we also have these ducks and all, which hatch these eggs. Okay, they lay eggs. So Okay. can these EcoBricks be used as a nest for them? Yes, we can I make mean, actually. because it's eggs from which new birds come out, or new ducklings or chicklings. So can these be used as a nest? Yes, we can. We don't have to put it in the tree ना, ऊपर ट्री में रखने का नहीं है, जमीन पे लगाकर we can use it. अभी रिसेंटली एक एनिमल शेल्टर बॉम्बे में बना रहा है। Actually, they got in touch with the Global EcoBrick Alliance team, and वहाँ से हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला कि उन लोगों को सपोर्ट करो करके, एंड मुंबई में एनिमल शेल्टर बन रहा है। हम लोगों को ऊपर नहीं रखना है, जमीन पे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं EcoBrick का। So Roshni, you mean to say कि trees पे जो birds eggs lay कर रहे हैं, we can't train them to lay eggs on this because we cannot. Yeah, because we have a small project in Kerala where we are creating nests in houses and trees so that these birds don't face a problem, because it's a Okay, huge my problem. concern तो ये is trees पे नहीं रख सकते आप बोल रहे हैं। Right. क्योंकि वेट है EcoBricks का वेट, वी हैव टू मेंटेन द वेट, एंड कम से कम भी 200 ml का EcoBrick का वेट होता है 66 ग्राम। तो 66 इंटू हम लोग बहुत सारा EcoBricks यूज करना होता है, ट्री में अटकाने के लिए वेट के लिए प्रॉब्लम होएगा, बट जमीन में हम लोग कुछ भी बना सकते हैं EcoBricks एंड ऑड बिल्डिंग टेक्निक से। Thank you. I would like to share something. I feel that, this awareness should be brought in schools amongst children. And, if they can, each child can get one EcoBrick made, and then, they collect it and donate it to organizations who are into building. It would bring more awareness. We as adults are learning it now, but I think the youth has to
every college and school should have this as an activity to do. So, Yogini, I think you can, Roshni and Yogini could take it up, In and fact, Roshni is always there. Yeah, sorry. definitely, Induji. I think a few months back I had posted in the message also. We had this competition, Paryavaran Sanrakshan Activity. My organization, we had organized a school competition, school environment competition across India, and the fees for that competition was just one eco brick. So just you pay. That was the registration fee. One eco brick per child, and that is all was used as a registration fee. So yes, in schools Wonderful. also definitely we host workshops for eco bricks in schools. And first thing which we need to tell children is कि eco brick बनाने के चक्कर में ज़्यादा मत खरीदना. So that is all we need to Yes, keep on of repeating course. even to our children. Yeah, and I would like Absolutely. to add here, Induzi, that is a very good idea you have given. We conduct online EcoBreak workshop for which I have posted the link. So Sure. in that, people from all across India can join. And we have another option, community started workshop, which can be done for just specific one school, and we can create a community in that school's name. Like I was telling about Kalimpong Eco Breakers, we are 160 members, and whatever eco bricks we are making as a community, how much plastic we are saving, that keeps on giving us encouragement. And as a community, it is not a rocket science to make a earth building structure, and we can use eco brick locally. And if we are sending it to somebody, we are sending it by car, and again, like carbon footprint and all. So without using any extra energy, just using one stick which Yogini was showing, and without creating any extra, like carbon dioxide or any trouble to planet, we are making eco brick. And by using earth mud from local community only, we can make some structure, and that will encourage more people to join this eco brick movement. And we are doing many workshop here locally, and online workshop also we are doing, and we do it in 2 sessions. First session is we do the presentation, and presentation is in 3 parts. First part, we learn about plastic, what exactly is plastic. And second part, we learn about biosphere, how by our carelessness of throwing plastic, how biosphere is getting impacted. And third is eco brick. And in eco brick making also, like that is the last option. First is consuming less, thinking before using any plastic, and then only whatever plastic comes to our life, we are making eco brick. So we do that presentation in first session, and then second session, like students or whoever, like participants, come with their eco brick in our session, and we show them how to create the their eco brick account on GoBrick app. And after that, it is like throughout the life, whatever eco bricks I'm making, I'm posting they're logging in GoBrick app. And I know I have the idea, like I have made so far 40 eco bricks, and by making 40 eco bricks, I have saved almost 8 kg plastic from going into biosphere in 1 year. So that keeps on encouraging me to make more and more eco brick. So we can have such kind of online workshop as well. Absolutely. I think that will really help. And even you can reach out to the children in the villages, because who are not getting educated, but this is a form of education that they can get into. Right. And in villages, like, in Kolkata and all, you have a, option for giving it for recycling. I am from a small village, from Kalimpong. I have to travel 25 kilometers to reach my village every day. So in my village, we don't have a garbage collecting facility, and people are concerned for not keeping our houses dirty. So whatever plastic comes to our house, many people, they are burning it. And burning plastic, so I'm learning when I'm doing the training from Global Eco Brick Alliance that this is actually, it is impacting our health. And if pregnant mother is inhaling the smoke, that child which is burning, going to take birth, they may suffer from cancer. So if we don't stop this immediately,
अभी आने वाला जनरेशन सबको कैंसर होने का चांसेस है. That also we have to educate in villages, especially where there is no garbage collecting facility. So अभी मैं जितना like you know पढ़ रही हूँ, जितना सीख रही हूँ प्लास्टिक के बारे में, तो कहीं भी प्लास्टिक यूज एंड थ्रो हो रहा है तो like you know मेरे को बहुत चिंता होती है. Yeah, I think there are no questions in chat box, Janki. Yeah, after You may proceed. Yeah. I need to say something. After Yeah. attending Yogini's workshop with Bijum, I started using this EcoBrick bottle. Okay. And this is what I'm also using. Okay. Wonderful, wonderful. Yes, And yes. today I got to learn something new from Yogini, that we have to clean the plastic well. Yes. So that is important, which I was not doing it. I mean, I was just cleaning it with a soft cloth. That is it, not washing it. So that is important, right? We have to clean it with water. Yes. Thank you so much. Yeah, I like to share one thing. Yeah, maybe Roshni ma'am want to show an authenticated EcoBrick. So this is the one. So from the Global EcoBrick Alliance, we will get a number, and this is the. I got 93 grams of EcoBrick. This is a 200 ml bottle. Yeah, we made it, and I have registered 6 EcoBricks. This there, and I'm a teacher from Telangana. So in my school, I have just given a project for children that. It is a really wonderful. Many children have did, but the thing is that they did not do it properly because of some other things. Then it will be better to train children to do these things. Thank you, Roshni, for directing all these things for me. I'm really. Yeah, thank you, Sweta, for sharing that. And I have just said about the Earthwind that there is a proper way of making the stick for sequestering the plastic. And Earthwind, we get training for making Earthwind also. If your stick is flat, as shown, if you open the link which I have shared with you all on the chat box just now, you will see the picture of Earthwind. It is made up of bamboo. So it's tip of the Earthwind is flat. So it helps us to sequester more plastics inside the bottle. So we are making it in Kalimpong also. If anybody is interested, you may contact us on Facebook page, EcoBricks India page. So we can connect you to the person who is making Earthwind after getting proper training. So it is a bamboo stick only. Yeah, thank you. I just saw a question. I'll just quickly give that as a reply to that question, which asked if you can do it on a commercial basis. So we know many organizations from Delhi. They are making, in fact, they have trained the ladies in the slum areas. They've been doing these eco bricks, and जो मैंने stool दिखाया था अभी, वैसे ही poofs बना रहे हैं, उसको पूरा cover करके सुंदर सा कपड़ा ऊपर से लगा के they are selling those for 700 rupees each piece. So imagine, you can, yes, definitely create an income for the underprivileged people. That's the best thing to do, I would Absolutely. say. Thanks a lot, Yogini. So, I am the president of the Sustainable Business Council of Wiki. So, and this is what I've been thinking all along, that this is actually a very good sustainable, business that we can teach in the slums and villages, so Yes. that, not only do they get motivated to, use the plastic in a better way, but they can also earn a livelihood or Absolutely, a little absolutely. bit of extra income. That would be So thank you really so nice much. if you could encourage the slum dwellers to Yes. do this. Yes. So I will probably get in touch with you both and see if we can take up such Sure. a project. It will be really good. Absolutely, For the world. absolutely. Thanks. Definitely. Thank you, Sujata, for joining Thanks in so today. much. Yeah, Sujata Absolutely. is I president of enjoyed this Sustainable session. Business at Wiki, and even they are doing a wonderful job, because I've attended their last workshop, and they are actually doing a good job. Yeah. So I think though there are no more questions, Janki, you can proceed with vote of thanks. Yeah. Thank you so much. Thank you, Sheetal. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion.
I, on behalf of WICCI, West Bengal Organic Farming Council, extend a very hearty vote of thanks to the Honorable Chief Guest, Ms. Roshni Rai, who blessed us with her presence and took out valuable time from her busy schedule. I must mention our deep sense of appreciation for her contribution towards the conservation of biosphere. And especially, ma'am, be the change to bring the change has touched my heart. Also, ma'am, out of the subject, still I would like to mention here that every Indian is proud of the Gorkha community and would always be obliged by their sacrifice made on the front line. I salute to each Gorkha people of your community, ma'am. I also wish to express my gratitude to our council member, our secretary, Miss Yogini Bapat. It was an immense pleasure to have you here as a speaker. And thank you for sharing the expertise and show us the path towards the conservation of the mother nature by starting a beat in our house. That was really important. There has to be a beginning to go on a path, to walk on a path. Thank you, Yogini, to show that path. Pleasure is mine. Thank you so much. तुम आगे बढ़ो, हम सब साथ हैं. हम सब साथ आगे बढ़ेंगे, जानकी जी. And today we also learned from these experts that a waste is a waste only if you waste it. Correct? As no program can become successful with a single person. So I extend my big thanks to our council for their support under the guidance of the very knowledgeable president, Ms. Sheetal Bavishing. We have been also fortunate enough to be backed by Manjula ji, Indu ji, and Ms. Harbin Arora. Thank you, Indu ji and Manjula ji, to be present here, and constant support is really appreciable. We cannot go ahead without your support. Also, again, my heartiest thanks to all the people who were directly or indirectly involved in this session, and the audience and whoever is present on Facebook and in this Zoom session. We are really grateful to everyone present here and make it successful. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for joining in. Thank you so much. Thank you so much, Roshni ji and Yogini, for this insightful session. Thank you so much. Sheetal ji, apno ko thank you nahi bolte. Yeah, I know that. Thank you, everyone. Thank you. So thank you so much, Roshni ji, everyone. it's been amazing to share the screen with you. My EcoBrick is in on process also.